Good morning, all of you. Welcome back to the channel. So we are starting with the analysis video for 13th of November. So we can see the Prime Minister celebrating Diwali with the armed forces. India is emerging as a big global power player, and that is in defense and forces ki jo capabilities hai, even they are improving. So we are focusing upon indigenization, on self-reliance, and we've been talking about कि और क्या हम reforms की बात कर सकते हैं. तो reforms में theater commands that is being taken up and उसके क्या benefits होंगे. Obviously वो synergy को और ज़्यादा increase करेगा. जो response time है वो और ज़्यादा increase हो जाएगा. Basically response में जो gap होता है वो time कम हो जाएगा, gap time. And with this we also created the position of CDS also. So India protected till brave hearts they are on the borders like Himalayas, and country is indebted to them definitely. Like there's no comparison to their services and contributions for India's safety. And borders ki agar hum baat kare to even we are focusing upon development of infrastructure also. We are having Vibrance Village program there. So बेसिकली फोकसिंग कि इवन जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहां से माइग्रेशन ना हो. सो चाहे वो इकोनॉमिकली हो, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ओवर देयर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज फॉर बेटर कनेक्टिविटी, वी आर बिल्डिंग ब्रिजेस, even when we talk about the railways network over there. So Oshik, if you want to add up something over here. Yes, first of all, इसमें जो डिफेंस प्रोडक्शन इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें मेजर बिग कंट्रीज इट्स कॉर्पोरेशन लाइक बोइंग हो गया या एयरबस हो गया एंड several other corporation, India has been able to bring them towards the joint manufacturing capability, say in Rafale okay, and also in HAL, thereby to increase the production capability of the indigenous industries like HAL. तभी हम लोग प्रचंड देखे हैं, या फिर अभी जो इंडिया हैज साइंड मेजर इंजन डील विद यूएसए फॉर GF-14 इंजन टू प्रोड्यूस द इंजन फॉर द न्यू कैपेबिलिटीज ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि इंडियनाइजेशन हो रहा है हर एक चीज. हाँ, इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी हम वही सेल्फ रिलायंस पे फोकस कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग कि ज्यादा हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना हो. इवन लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी जो हम बात कर रहे हैं, आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि राफेल की बात हो या और कंट्रीज के साथ जो डिफेंस प्रोडक्शन में कोलैबोरेशन हो, यूएसए की बात करें, तो हम फोकस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में आनी चाहिए एंड उसको यूज करके विल बी मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडिया. देन One more point I want to add here. Okay, Aanchal, you can go. To मतलब अलग डिस्क्रिमिनेशन को हम डील करने के लिए हमने मतलब फीमेल्स को भी आर्मी फोर्सेस में मतलब हाँ यूज करा है, तो फिर वो भी एक नया मॉडल है. ठीक है. हाँ, वो भी एक पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है. Then airports to metro, how we see कि जो नॉन कोर businesses हैं, they are bringing firms more money. So basically directly these are not related to the core part of the businesses of different companies, but ये जो बोल सकते हैं नॉन कोर पार्ट है, एयरपोर्ट्स की बात करो या मेट्रोज की बात करें, तो वहां से we are seeing huge amount of revenues being generated. So in maximizing income from the airlines to the themed parks, from airports to metros, Indian companies over the years, they've realized how best to leverage the assets and expertise to maximize the income. So if airports, they make the most of the real estate space, Delhi Metro uses its expertise to offer consultancy. So that's how how these services are also generating revenue. And when we talk about modernization of the railway stations also, so IRCTC, that's important player. And वहाँ पे भी हम बात करते हैं कि even how metro station, sorry, railway stations को हम और कैसे modernize बना सकते हैं. We can create more shopping malls at that particular station, जिससे और additional revenue generate हम कर सकते हैं. So
यहाँ पे एग्जांपल देखे तो मेगा एयरपोर्ट्स लाइक दिल्ली का जो आईजे एयरपोर्ट है या मुंबई का रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज आल्सो देयर. So that should not just be seen as airports but also mega shopping and hospitality centers, also integrated real estate developments which are happening there. So यहाँ से भी additional revenue generate हो रहा है. So urban livelihood mission जो है this would be ending in March 2024. So government may bring the second version of it. So urban livelihood mission Ministry of Housing and Urban Affairs के अंडर आता है and it focuses कि जो migrant poor है cities में जो migrate करते हैं so उनके welfare के ऊपर focus किया जाए. And जो second version है we expect कि it could target different occupation groups in the cities and not just the migrants. Like basically migrants में भी construction workers पे और focus हो सकता है, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या जो और unorganized sector workers हैं उनके welfare पे भी equally focus होना चाहिए. And currently जो mission है focus it also focusing is upon creating women self-help groups, conducting skill-based trainings and setting up shelters for the urban homeless and supporting the street vendors. So street vendors के लिए we having the scheme also PM Swanidhi scheme जो है that is for the street vendors. And ये बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मिनिस्ट्री आपको मैंने बता दी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सो मतलब अर्बन लाइवलीहुड में और आप क्या इमेजिन कर सकते हो, क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स इस मिशन का पार्ट रहे हैं. Yes, Mansi, apart from that, some ID card must be given to them, and because they face a lot of discrimination from the administration and also the society. With the use of ID card and other channel for grievances, they can be able to sustain livability in the city. हाँ, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर है तो इसलिए दे हैव टू गो हाँ, थ्रू ऑल दीज yes. थिंग्स, तो उसको और हम फॉर्मलाइज कर सकते हैं. देन डिजास्टर वी आर सीइंग, जो चार धाम में टनल जो थी इट कोलैप्स्ड, सो दिस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन. उत्तरकाशी में इट हैज कोलैप्स्ड, सो वी नीड टू बी अगेन फर्स्टली प्रिपेयर्ड अगर ऐसा कोई डिजास्टर होता है स्पेसिफिकली हिली स्टेट्स में. एंड with this जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स आल्सो, सो वी नीड टू लुक इनटू जो अगेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. with that जो डेंजर ज्यादा एसोसिएटेड रहता है with the tunnels, so we need to look कि कौन सी locations they are more safe. so although benefits बहुत ज्यादा high रहते हैं of constructing tunnels, जो travel time है वो reduce हो जाता है and we get also you know better roads through these also. so but यहाँ पे again danger भी equally present रहता है. so state disaster response force they have reached the location and अभी तो obviously we are trying कि मैक्सिमम लोगों की, जितने लोगों की हम जान बचा सकते हैं वो पॉसिबल. बट प्रिवेंशन के लिए हम इसका और क्या कर सकते हैं, मतलब द काइंड ऑफ मटेरियल दैट वी आर इसमें यूजिंग एक फॉर द है कंस्ट्रक्शन. मानसी कि we can construct a separate tunnel, so a small tunnel for exit. जैसे एक ऑल्टरनेटिव टनल होता है, जब भी आप टनल कंस्ट्रक्ट करते हो तो पता है कि कभी भी गिर सकता है, तो आई थिंक देयर शुड बी अ सेपरेट चैनल, सेपरेट टनल नियर बाय, that will be very small. It will be helpful during the emergency. हाँ, मतलब एक तो ऑल्टरनेटिव रूट और होना चाहिए. छोटा टनल होना चाहिए, इसमें हम्म. सिर्फ एक आदमी आ सकता है हाँ, क्योंकि अगर हाँ एक ही ताकि रूट है, इमरजेंसी. एक ही ऑप्शन है, अगर वहां पे कोलैप्स हो गए तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास. यस. तो ठीक है, दैट कैन बी लुक्ड इनटू. और जो मटेरियल है वी कैन आल्सो, मतलब जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वी कैन आल्सो लुक इनटू दैट आल्सो. कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा बनाया जा रहा है. यस. So India Pakistan border and we see कि drones जो 82 drones have been recovered, 593 sightings हुई हैं drones की by the security forces across the border. So technology, how it is being misused also. So we are coming up with an anti-drone system at the same time to deal with this menace, and how technology has made this security threat transnational in nature.
So that's there. And obviously ड्रग्स को यूज किया ड्रोन्स को यूज किया जाता है फॉर ड्रग्स. तो ये इलीगल एक्टिविटीज एंड स्मगलिंग के लिए ड्रोन्स आर बीइंग मिसयूज्ड. So this is the thing. So BSF, it is stationed on So India-Pakistan. Mansi, how can you control the drone, or क्या method? What are the methods that हाँ, can be used? मोस्ट इफेक्टिव मेथड अभी जैसे मैंने मेंशन किया एंटी ड्रोन सिस्टम पे वी आर वर्किंग, बट अभी उसकी लाइक डिटेल्स नहीं एग्जैक्टली कि वो हमें उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम के. और तो मतलब ऑब्वियसली इफ दिस इज अ टेक्नोलॉजी, so you need another technology to counter this thing. Apart from this, like what can be the other effective solution? मेरे को और कुछ नहीं समझ में आता है यहाँ पे. Like you can mention अगर आपके पास और कोई नया पॉइंट है इसके लिए. इसमें दो I will add 2 points. First of all, small anti-drone mechanism that is being developed by DRDO. Currently, I am not able to recall the name. Second would be use of organic method such as training of kites and eagles. That can be also used. Israel and other US country, they use of birds to catch drone because they are faster, they are more agile, and they can hide in the nature. That's it. ठीक है. मतलब उसकी इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी ज्यादा हमें. ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है. So when we talk about कि क्या solutions हो सकते हैं for this preventing the manual scavenging, so we see भावनगर गुजरात में there was recently death of again manual scavenger due to the release of the gas from that particular chamber या जो tunnel है. So chamber where this worker died, part of prototype for treating the wastewater उसको install किया गया. That's how it looks. आप picture में देख सकते हो. And अगेन मतलब टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ही है. और बाकी एरियाज हम कवर कर चुके हैं. वी हैव सीन कि जो सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है व्हिच इज देयर इन भावनगर, इट इज आल्सो लोकेटेड देयर इन गुजरात. सो दे हैव इंस्टॉल्ड दिस प्रोटोटाइप. सो एक प्रोटोटाइप है एंड दिस वाज बिल्ड इन 2019. So prototype constructed wetland to treat the domestic wastewater and develop a technology for water recycling. So that's how it will be helping us. So the name of this prototype is decentralized multi-stage constructed wetland for the sewerage treatment. Now इसकी अगर हम capacity की बात करें तो it can treat 3600 liters of domestic wastewater every day. And average जो है 25,000 से 30,000 liters of domestic wastewater is there जो basically generate किया जाता है. So how basically इसका alternative technology है how like even we are having Delhi में machines भी हैं like they are performing several functions, not just treatment but all of that is covered there. मतलब हमें exact name उसका देखना पड़ेगा कौन सी machine है. Vocal for local, we have been talking about this during celebrations of festivals. Diwali में earthen diyas, going local for them. And even lights की बात करो, crackers हम बात कर चुके हैं, green crackers. The only byproduct is water vapors, but despite that we have been seeing कि even Supreme Court ने जो timings भी fix की गई थी administration में कि 2 hours of time was permitted by the administration, but despite that we are seeing कि even like Delhi में तो we have seen कि ऐसा कुछ major change नहीं देखने को मिला and pollution has spiked massively. But Bombay में there has been quite a celebration of Diwali this time. So implementation here and implementation would be possible with the people's cooperation over here. So prototype for improved detection of STH parasites.
So here, this has been made by the Gujarat Technological University. So this is for the detection of parasitic intestinal worms, soil transmitted helminths. So startup, and they have built this with the help of IIT Bombay. So basically, alumni tha, the person who is working upon this startup. So this is the first technology transfer from an institute to industry in Gujarat. So basically, जो soil transmitted helminths होते हैं, they're a group of parasitic worms that are transmitted to the humans through contaminated soil. And majorly ये cases report होते हैं from the areas जहाँ पे poor sanitation and hygiene रहता है. And worms include roundworms. This is their scientific name. Whipworm है and hookworm. So they basically enter the human body. So WHO estimated 1.5 billion people worldwide they're affected by these infections. एंड सबसे ज़्यादा ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रिपोर्ट होते हैं. इंडिया में अगर हम बात करें, these infections they are a major public health concern there in India also. So around 31% is the prevalence of these infections in India. So ज़्यादा prevalence है northern states में. And children between the age of 5 to 14 years में ज़्यादा ये cases prominent रहते हैं. And these are also responsible for causing malnutrition and growth retardation and also anemia. So these are the outcomes of this disease and the infection. So stool microscopy is the most widely used diagnostic technique for detecting due to its low cost and simplicity. So Central Drug Standard Control Organization is one regulatory body when we talk about the pharma sector. And National Pharmaceutical Pricing Authority is for specifically looking into कि price कैसे determine हो रहा है, and basically market में there is like no illegal kind of activity is going on जब हम price of drugs की बात करते हैं. So when we read this worldly wise, so economy is frequently nothing to do with the amount of money that is being spent, but with the wisdom used in spending it. So Oshik, इस पे comment कर सकते हो? Yes, it talks about the priority in which the government is spending its own money. For example, if we are spending that for farm waivers or freebies, then there is no wisdom in it. But wisdom lies in that, for example, in spending of that amount of money in education, health, or even creating infrastructure, capex, etc. So the quote is saying that economy has frequently nothing to do with the amount of money being spent. That is right. If we compare example with US Fed, it spends a lot of money, trillions of dollars. It prints trillions of dollars. It only contributes to the inflation. But with the wisdom used in spending it, it means that at the government or even at an individual level, I will divide this into individual level, government, and even the corporates. The corporate, we can use CSR for this. In government, we can use financial prudence for spending in education, health, R&D, etc. all the thing. And at an individual level, we can use that in uh,
जो म्यूचुअल फंड, consumption, हाँ, consumption म्यूचुअल spending फंड है। और हाँ कंजम्पशन स्पेंडिंग, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, बाइंग ऑफ एसेट। हाँ ठीक है, इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपरली। एंड इवन इसको हम डिफेंस सेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं कि वहां पे भी कितना स्पेंड कर रहे हैं, यस, एरिया कौन सी टेक्नोलॉजी पे, न्यूक्लियर पे स्पेंड कर रहे हैं या कहीं और स्पेंड कर रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पावर ऑफ रिटेल, तो यहाँ पे बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। सो लार्ज चंक्स ऑफ जो पैसा इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, वी आर सीइंग इनटू डोमेस्टिक इक्विटीज, पैसा सबसे ज्यादा आ रहा है स्मॉल टाउन्स में से एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टमल्ट अराउंड देम। सो इसीलिए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि इफ वी आर सीइंग ह्यूज इनफ्लो, मतलब ये पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है। So one, तो we are seeing positive channelization of money हो रहा है, that too in the equities market. Secondly, negative would be there कि financial literacy एक बहुत बड़ी problem है, तो chances of incurring losses बहुत ज़्यादा high रहते हैं। So SIP we have talked about, यहाँ पे basically data है कितना पैसा आया है, so that's not that important, but what is SIP, mutual fund, ETFs, this has already been taken up, assets under management. So this is basically one of the factors जब आप mutual funds की बात करते हो, how you determine कि 1 unit of buying a share under mutual fund आपको कितना cost करेगा, so that is determined through this assets under management by a mutual fund. So 10 years ago अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ दी cities in the mutual fund industry, small cities की हम बात कर रहे हैं, it was on a much smaller base, it was just 2.5%, and 5 years back it rose to 9%. So power of retail enormous है definitely, because India में जो population number of investors है that is huge, and the flows they have been undisturbed by events around the world, like Ukraine में जो war हो रहा है या US की जो Fed policy decisions आ रहे हैं, inflation is rising, but still we are seeing कि जो trend है उसके ऊपर इन फैक्टर्स का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, but that is impacting the foreign portfolio investors. So we are seeing कि they have been exiting from the Indian shares market, capital market. So this is building a good set of investors and helping stabilize the Indian markets. So ठीक है, it is helping in stabilizing the Indian market. Foreign influence थोड़ा सा कम है, but FPIs की जब हम बात करते हैं तो they are big investors. तो जब वो पैसा withdraw करते हैं तो कहीं ना कहीं जो retailers का loss है ना वो increase हो जाता है, because the FPIs they are big players. Mutual funds की आप बात करो तो big players के जो decision रहते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है तो उनका एक decision का जो impact है, यू कैन इमेजिन कि अगर वो कलेक्टिवली एग्जिट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा उनके डिसीजन का। तो रिटेल इन्वेस्टर्स कंपैरेटिवली इट इज स्मॉलर इन नंबर, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के जो डिसीजन रहते हैं उनका इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। सो दैट्स हाउ समवेयर दे गेट ट्रैप्ड। We have discussed about the loss and damage fund. So disappoints in not fixing the commitments. मतलब fund तो आपने बना दिया, but what about the commitments? So gender blind justice and gender neutral justice, इसमें क्या difference है औशिक? जेंडर ब्लाइंड जस्टिस मीन्स it is negative connotation हाँ थोड़ा that सा नेगेटिव है। yes, we are not thinking about any gender name, we are gender blind, gender neutral means we have to treat every gender as equal on equal footing. Gender blind means we are discriminating on the basis of gender, or we are नहीं, not talking about ये the बोल affirmative सकते action. जेंडर न्यूट्रल और जेंडर ब्लाइंड कहीं ना कहीं सिनोनिमस टर्म्स ही हैं, बट जेंडर ब्लाइंड थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन जैसा आपने बोला।
मतलब gender blind, you're not, delivering justice on the basis of gender of an individual. It is gender blind. So we do not need new codes and procedures with novel titles. We need system that is accessible, affordable, which is efficient, and it does not discriminate. So in a way, we are talking about implementation rather than having more number of laws. Yeah, definitely reforms and laws, that is important, but this is other important है कि system accessible ho, efficient ho, and we are actually seeing things happening on the ground. So we need to ensure कि having launched an FIR, women's case is investigated. ये हमने in detail बात करी थी इस aspect की, and that at the trial stage it receives the same attention that a case registered by a male complainant does. Serving of summons to production hai witnesses, submission of the medical forensic evidence, presence of investigation officers, hona chahiye, competent prosecutors need to be pursued, and then validity of the conclusions drawn by the research based totally on the secondary sources. So basically that needs to be looked into कि जो research है या की जा रही है forensics के द्वारा, that is like reliable. And stepmotherly treatment meted out to the woman at various levels of criminal justice system, that cannot be ignored. And LGBTQ community equally, it needs to be, equal to them also. It needs to be neutral to them, I should say. So वहाँ पे भी ये similar kind of discrimination नहीं होना चाहिए. So multi-dimensional discrimination देखा जाता है. So this is again थोड़ा negative word ही है. So sustainable solution for stubble burning is to create a market for the paddy straw and convert the waste into wealth. So that can happen through waste to energy plants. उसमें भी we see कि a particular type of waste ही convert किया जा सकता है. So we can look into कि कौन सा waste रहता है. Segregation of waste की importance हम बात कर चुके हैं. यहाँ पे बात हो रही है stubble के लिए. तो this also we have talked about. यहाँ पे थोड़े हमने challenges की बात करी थी कि logistical challenges आ सकते हैं, and farmers को कैसे पता होगा markets. यहाँ पे जैसे creation of market, तो वो मार्केट को क्रिएट करना ही इंपॉर्टेंट है. पहले लोकेशन, फार्मर्स कहाँ जाके इसको सेल करेंगे, कौन से प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स इसको बाय कर सकते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट दैट कैन बी फर्दर यूज्ड एज in manufacturing of ethanol, cleaner fuel. So that's how this is interlinked with each other. And the last 10 years or more have been good for the agriculture sector in India. And if you make a global comparison, our share in the global agriculture GDP has increased rapidly. So we have left China behind in the agricultural growth. So this is very important. And Ramesh Chand, he is member of Niti Aayog and an agricultural economist of repute. So we see wherever there is irrigation followed by free or subsidized power for the extraction of groundwater, rice cultivation follows. So ये एक हमें pattern और trend देखने को मिला है. जहाँ पे irrigation available है, subsidized या free power available है, तो वहाँ पे farmers prefer करते हैं rice को cultivate करना. So that's there, and उसकी वजह से problems हमें पता ही है. So we should put water meters लगने चाहिए. Let the water supply be metered and the farmer will use water rationally. तो तभी ये possible है when you will be, obviously you'll have to pay for the amount of water that you'll be using. क्योंकि obviously subsidy की वजह से यहाँ पे ये एक disbalance create हो जाता है. We are seeing कि India is already a water scarce country. So nota. Achal, what is nota? नोटा मीन्स मतलब कि आप कोई आंसर नहीं देना चाहते, आई थिंक. अच्छा, फुल फॉर्म क्या है नोटा की? आई डोंट नो. ठीक है, इट मीन्स नन ऑफ द अबव. मतलब कि एक ही ऑप्शन रहता है एज अ वोटर. अगर आप वोट कास्ट करना चाहते हो एंड जो कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हो, तो आप नोटा का बटन प्रेस कर सकते हो कि आप किसी को वोट नहीं कास्ट कर रहे हो, बट यू हैव चोजन
नोटा। तो उससे एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिकेशन जाता है कि बेसिकली आपकी चॉइस क्या है, या how voters are susceptible of the contesting candidates, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है. So this was introduced in 2013, none of the above option. It has got around 1% vote in the two general elections after 2013 जो हुए हैं. And what is this option for the voters, ये मैंने बता दिया simple language में. What are the arguments for and against it? So इसकी performance की हम बात करें, एक तो डेटा हमने देख लिया, सिर्फ 1% वोट ही कास्ट किए गए to the nota option. And so first nota votes, they are counted as invalid and they do not contribute towards the result. तो मतलब nota votes count नहीं किए जाते when the result is calculated. Secondly, there is no provision for repolling अगर nota polls most votes नोटा पोल्स को मिलते हैं, तो उसके बाद फिर से रीपोल्स नहीं किए जाते. तो अभी तक इंडिया में यही प्रोविजन है. बट यहाँ पे फिर डाउट आता है, इफ नोटा गेट्स मैक्सिमम वोट्स, सो ऑब्वियसली अच्छा ठीक है, फिर जो बाकी कैंडिडेट्स को जो वोट मिलते हैं अकॉर्डिंगली द रिजल्ट इज अनाउंस्ड. सो उसके बेसिस पे रहता है, मतलब वोट के बेसिस पे. बट नोटा को अगर मैक्सिमम मिल रहा है, स्टिल उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मतलब वी आर नॉट फैक्टरिंग. तो मतलब फायदा क्या हुआ? औशिक, आप इसको थोड़ा और बता सकते हो? मतलब नोटा को अगर मैक्सिमम वोट मिल भी रहे हैं, फिर भी हम रीपोल नहीं कराएंगे, तो मतलब इट रेजेस क्वेश्चंस ऑन द रेलेवेंसी ऑफ नोटा. फिर नोटा का फायदा Basically, nota is for Mansi. It is for a behavior change in the electoral system. जैसे अगर नोटा ज़्यादा मिल गया तब उससे एक दबाव रहेगा पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में कि आप चेंज करें कैंडिडेट. मतलब इट इज नॉट डन फोर्सफुली हाँ पर बाय द हाँ, तो उसके लिए नहीं, बिहेवियरल चेंज वो बस, हाँ बिहेवियरल चेंज नहीं, एक इंडिकेशन ही जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को हाँ, बस. इंडिकेशन. आप हाँ डायरेक्ट जबरदस्ती बट आप वो, नहीं कर हाँ सकते ना पॉलिटिकल पार्टी में, सबका राइट है लड़ने का, तो वो बात हो जाती राइट है लड़ने का, बट अगेन नोटा का है. अनाउंस कर. राइट है कि वो कंटेस्ट कर सकते हैं हर कोई, लेकिन नोटा ज़्यादा मिले अगर, तब फिर उनको लगेगा कि और लोग को होना चाहिए था, वही रहेगा. हाँ, और अगर हम रीपोल भी कराते तो अगेन वो एक कॉस्ट इंटेंसिव एक्सरसाइज भी है इंडिया में अगर आप बात करो. सो नोटा का एक सिंबल भी, इट वाज गिवन इट्स ईवीएम सिंबल ऑफ ब्लैक क्रॉस ऑन अ बैलेट पेपर. सो ये सिंबल है नोटा का, 2015 में ये दिया गया था. And nota reforms, but only local level elections may it could govern. 2018 Maharashtra deemed an election invalid if nota received the most votes in पंचायत और म्युनिसिपल पोल्स. तो मतलब लोकल लेवल इलेक्शंस पे यहाँ पे स्टेट्स का डिस्क्रिशन आ जाता है. सो महाराष्ट्र में यही है कि अगर नोटा को ज्यादा वोट्स मिले तो दे विल नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, वोटिंग एक्सरसाइज टू बी वैलिड. फिर से रीपोल्स किए जाएंगे. So fresh elections would be called with the new candidates in such cases. Haryana की बात करें तो it introduced a similar provision. Delhi also introduced re-polling in such instances. So basically local level elections पे ही prevalent है. So 2021 में Supreme Court issued notices to the Center and Election Commission on a petition seeking election results be nullified and fresh polls होने चाहिए if nota secures the maximum votes. तो even Supreme Court ने भी इसी चीज को आगे एज एन ऑर्डर दिया है टू दी इलेक्शन कमीशन एंड दी सेंटर ऑल्सो. मतलब वही है कि फिर रेलेवेंस क्या हुआ नोटा का, अगर नोटा को ज्यादा मतलब वोट्स मिल भी रहे हैं तो आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, उसका तो कोई ऐसा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा हमें एक्चुअली. सो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड nota at the national level is there. So these are things around it. So 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया था कि नोटा ऑप्शन कैन नॉट बी मेड अवेलेबल इन राज्यसभा इलेक्शंस में नहीं हो सकता है. सो दैट्स देयर. सो राज्यसभा इलेक्शंस में नोटा इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट एप्लीकेबल. सो एटलीस्ट डजन अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में भी नोटा है, या इसको बोलते हैं नेगेटिव वोट ऑप्शन भी बोला जाता है. फ्रांस की बात करो, स्पेन इन यूरोप, ब्राजील एंड सम स्टेट्स इन इवन यूएस आल्सो हैव. सो नेबरहुड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश में भी नोटा इज देयर एंड पाकिस्तान में भी 2013 में दे
as did Pakistan 2013, out of which it was okay. It was then later on discontinued there, Bangladesh में. So how we can make the goat milk mainstream? Potential क्या है, challenges and उसके health benefits क्या हो सकते हैं? So ओके आंचल, आप क्या कह रहे हो कि नोटा की वजह से वर्ड्स प्रॉक्सी वोटिंग, नहीं ये नहीं हो सकते हैं, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है. ओके गोट मिल्क मेन स्ट्रीम करने के लिए गोट मिल्क के पोटेंशियल अगर हम बात करें तो अगेन एक सर्वे किया गया गुजरात एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टरेट, दे हैव एस्टिमेटेड कि जो स्टेट का गोट पॉपुलेशन इट इज अराउंड 50 लाख and 1 liter is equal to 1 kg of milk. So this was around 2% of the state's total milk production. And this Amul ka reaction to this, we see 18 district cooperative milk producer unions, including the Sursagar dairy. So they produce around this much. So यहाँ पे camel milk की अगर हम बात करें 5% is being procured from the camel breeders in the Kutch district. 5 years ago this was started. बाकी सारा it is cow and buffalo milk का ही हमें domination देखने को मिलता है even in at the pan India level. So goat milk जो है it is very good for the health, but much depends upon how a product is branded and it is marketed. So ये बहुत important aspect है इसका. Obviously milk players they play a big role in this. So launching any new product उसके अपने challenges हैं because already जो market में established players हैं उनके साथ एक new player का compete करना उसमें definitely economic challenges रहते हैं. The amount of again जो goodwill ये already established market players enjoy करते हैं उसको आप अपनी brand की तरफ कैसे attract करोगे consumers को. So in terms of marketing and planning बहुत ज़्यादा even financially also you'll have to spend a lot of amount. So capital investments करनी पड़ेंगी even in procurement, processing and distribution channels. So camel milk, can it also be one of the parallels to cow and buffalo milk or not? So कोई formal mechanism नहीं है to sell the produce. So pastoralists they often prepare mawa जो एक ingredient है जिससे sweets बनती है from the goat milk. तो this is one of the bottlenecks which is faced by the the people and जो dairy farmers हैं. So given the quantity of milk that a goat produces every day, they may not